Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani, Aura. In last class, we studied the new chapter as similarity, right? So definition of similar figures. The figures having same shape but different size are called similar figures, right? So similar figures means the figures having same shape but different si size are called similar figure. See here, ABC is a triangle and PQR is also a triangle. These two triangles have same shape but different size. This type of figures we call similar figures. तो उसमें ही हमें तो congruent figure कहेंगे. What is congruent figures? The figures having same shape and same size are called congruent figures, right? Next, तो हमें सिमिलैरिटी चैप्टर में क्या क्या आएंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड आउट करना होंगे, राइट? तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए, राइट? सी A B C. This is a right angle triangle. We know that area of triangle is equal to 1 by 2 into base into height, right? तो area of triangle is equal to 1 by 2 into B into H भी आप लिख सकते हैं, right? 1 by 2. See here, this is base, hypotenuse, and this is height, right? So BC is the base and AB is the height. तो area of triangle is equal to 1 by 2 base into height करना है. Okay. Next, तो हम क्या पढ़े सो है? Next, area ratio of area of two triangles, right? You take any two triangles, right? The ratio of area of two triangles ABC, and you take another one triangle PQR, right? तो कंडीशन उसमें थ्री कंडीशंस हैं. सपोज the ratio of area of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights, right? हमने कल ही इसके प्रॉपर्टी किए सो है, right? The ratio of area of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height, right? तो B1 into H1 divided by B2 into H2, right? Product of their. Next, इसमें कंडीशन है, right? Suppose base are same, right? तो हमने कंडीशन पढ़े से फर्स्ट कंडीशन, suppose in that the ratio of area of two triangles the bases are same, तो किसके साथ इक्वल रहेंगे रेशियो? The area of two triangle is equal to the ratio of their corresponding heights. तो बेस सेम रहने के बाद वो किसके साथ इक्वल रहेंगे? हाइट के साथ इक्वल रहेंगे. एंड सेकेंड कंडीशन क्या है उसमें? सपोज हाइट विल बी सेम. हाइट सेम रहने के बाद क्या होता है रेशियो? The ratio of area of two triangle is equal to the ratio of their corresponding base, right? तो थर्ड कंडीशन क्या है, right? तो इसमें देखो फर्स्ट बेस सेम रहने के बाद हम कैसे लिखते हैं? the ratio of area of triangle is equal to, तो बेस सेम रहने के बाद h1 by h2. सपोज हाइट सेम रहने के बाद the ratio of area of triangle is equal to the ratio of their corresponding bases. तो इसको B1 by B2 लिखते हैं. Suppose the condition 3, suppose the base and height of a triangles are equal, then area of triangle, the ratio of area of triangle is equal to 1. Are you right? The area of triangle और यहाँ ABC is equal to area of triangle PQR, right? तो हम यहाँ तक
कल स्टडी किए सो है। See in practice set 1.1 question number 2 the given see here BC is perpendicular to AB, right, and AD is perpendicular to AB, and the given measuration of BC is 4 and AD is 8. Then find the ratio of area of triangle ABC and area of triangle ADB, right? The given figure this is D, A, B, this is C, right? This is question number 2. See here the given question number 2. See here the given BC is perpendicular on AB, and again the given AD is perpendicular on AB, right? And the given measuration of BC is 4, right, and AD is 8. तो हमें फाइंड क्या करना है, the ratio of area of triangle ABC as well as the ratio of area of triangle ADB, right? तो लिखो solution of this question. See in this figure, see here, this is the height, AD is the height. In ABC triangle, BC is the height and AB is the base, right? And in triangle ABD, AB is the base and AD is the height. See here the solution, right? तो हमें find out क्या करना है, the ratio of area of triangle ABC and the ratio of triangle ADB. तो हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट? अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाफ इनटू बी बेस इनटू हाइट, राइट? तो आप लिखना है तो यहां लिखो, इन ट्राइंगल, मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC AB is a base, right, and BC is a height, and in triangle ADB AB is base and AD is height, right? So see here the ratio of area of two triangle is equal to half of get cancel, base क्या है, AB है, in triangle ABC. See here base is AB into and height is BC, right? Again in triangle ADB, right, base is AB and height is AD, right? So get cancel, right? AB get cancel, then BC divided by AD. The given, see here, BC is 4 and AD is 8. 4 ones are 4 twos are 1/2. तो आप इसे और एक तरीके से कर सकते हैं. See here, the base of, see here, AB is the common base of two triangle ABC as well as ABD. तो हमें कंडीशन मालूम है, right? What is the condition is, suppose the base are same, then the ratio of
area of two triangle is equal to the ratio of their corresponding heights। वो प्रॉपर्टी भी लिख के आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, तो ये लिखने के बाद आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, राइट। सपोज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू दी, तो क्या है, बेस सेम रहने के बाद तो उधर किसके साथ इक्वल रहेंगे, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, see the question number 3, the given in adjoining figure segment PS is perpendicular to segment RQ and segment QT is perpendicular to segment PR, right? If RQ is 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT, right? The given figure TQ, this is S, right? PQR, right? This is the given figure, right? The given PS, see here, PS is perpendicular on RQ line, right, or segment RQ, and segment QT is perpendicular on segment PR, right? So PR, QT is perpendicular on PR. Next, the given PQ is 6, right, and PR is 12 and PS is 6, right? The given. See here, the solution, we know that the formula of area of triangle, area is equal to 1 by 2 into base into height, right? Base into height. Then area of triangle PQR is equal to, see here, in triangle PQR, right? So in triangle PQR, see here, 1 by 2, base is QR, right, and height is PS. See here, in triangle PQR, this is this type of triangle, right? We extend line, take here PS, so yes, I say it, right? It is QR into PS, right? 1 by 2 into QR is given 6 and PS is 6. 1 by 2, 6 into 6 is 36. 1 za 8 za 18 square units, right? So area of triangle PQR is equal to 18 square units. So 1, right? Next, again see here, area of triangle, also area of triangle PQR is equal to half into base into height, right? Base into height. Again, area of triangle PQR is equal to 1 by 2 into PR into QT. See here,
तो फर्स्ट मैंने पी क्यू आर लेने के बाद पी एस इज द हाइट लिया था, राइट। अब नेक्स्ट पी क्यू आर, सी है पी आर इज द, दिस इज द बेस एंड क्यू टी इज द हाइट। तो ट्राइंगल कैसे आता देखो, तो ऐसे ट्राइंगल है वो, राइट, दिस इज द, राइट, this is Q, this is T, this is PR, right? See here, PR is the base and QT is the height, right? They give 1/2, right? 1/2 PR. PR we know that 12 and QT. And we already find out the area of triangle PQR is equal to 18 square units. So 18. Right? See here 18. So 18 is equal to 1 jar 6 jar, right? 6 into QT, ये दोनों प्रोडक्ट में है। 18 divided by 6 is equal to QT, और QT is equal to 18 by 6, 6 1s are 6 3s are, QT is equal to 3. This is the answer, right? Remaining problem you solve. Next we go to theorem. See, the next is theorem, basic proportionality theorem. This is the very important theorem, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया सो है, स्टेटमेंट, see here, if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. See here, this is the statement of basic proportionality theorem, right? Suppose in exam they ask write the statement and proof of basic proportionality theorem, then you write statement also, right? तो देखो statement क्या है, if a line is parallel to a side of a triangle, तो कौन से भी साइड को हम एक लाइन पैरेलल लेने के बाद of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divide the sides in the same proportion. Suppose you take a triangle ABC, right? तो देखो स्टेटमेंट की तरफ से, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ए बी साइड को, बी सी साइड को मैं क्या करता हूँ, एक पैरेलल लाइन लेता हूँ, राइट, एल इज द लाइन, राइट, साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द remaining
remaining sides in two distinct points. तो यहाँ P लो, यहाँ Q लो, right? Point. Then the lines divide the side in the same proportion. तो क्या होता है proportion बोले तो AP divided by PB and AQ divided by QC होता है, right? तो क्या है statement? If a line is parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divide the side in the same proportions. See here, तो BC को मैंने पैरेलल लिया है, आप कौन से भी साइड को आप पैरेलल लाइन ले सकते हैं आप, राइट? तो AB को भी ले सकते हैं आप और AC को भी ले सकते हैं, राइट? तो स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो BC साइड है और L इज ए लाइन है, तो देखो of a triangle intersect the remaining side in two distinct points. तो BC के साथ लाइन L क्या है? पैरेलल है और AB and AC are another two side of a triangle. This line intersect in two distinct point. तो यहाँ P है, यहाँ Q है, तो ये दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो PQ are two distinct point. Then the line divide the side in the same proportion. तो ये लाइन क्या करता है? इन दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. सपोज AP is divided by PB and AQ divided by QC. This is the proof, right? ऐसे हमें प्रूफ करना है, ओके? सी है, तो स्टेटमेंट आपको मालूम होगा, राइट? इफ ए लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड्स द अनदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन इज डिवाइड द साइड इनटू प्रोपोर्शन. तो कैसे? AP डिवाइडेड बाय PB एंड AQ डिवाइडेड बाय QC. तो लिखना है आपको, तो थ्योरम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, बाद में उसका गिवन लिखो. गिवन इन ट्राइंगल ABC line L is parallel to, see here, the line L is parallel to BC, right? Line BC or L is parallel to BC and line L intersects AB and this line, AB and BC and AB and AC in point P and Q respectively, right? तो देखो ए ट्राइंगल जो गिवन दिया सो वो लिखना है. ए ट्राइंगल ABC line L is parallel to line BC and line L, जो ये लाइन है, इंटरसेक्ट AB and BC in point P and Q respectively. नेक्स्ट, तो हमें क्या प्रूव करना है वो लिखो. टू प्रूव क्या करना है? हमें साइड को प्रोपोर्शन में लिखना है. AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC. प्रूफ करके दिखाना है. तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? देखो, ड्रा segment PC and segment QB, राइट? तो ये ड्रा करना है, तो कंस्ट्रक्शन करना है, राइट? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूफ, राइट? फर्स्ट स्टेप इज
स्टेटमेंट, स्टेटमेंट होने के बाद गिवन, उसके बाद क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, ड्रा पीसी एंड क्यूबी सेगमेंट्स, राइट। तो प्रूफ देखो, ट्राइंगल, ट्राइंगल APQ and or in triangle APQ and PQB have equal heights. See here, in triangle APQ and triangle PQB, तो ये दोनों को ही देखो आप, PQB and APQ, the triangle having heights are equal. Equal heights means PQ is the common height of these two triangles. See here, APQ and triangle PQB, right? So we know that the ratio of area of triangle APQ and area of triangle PQB is equal to, तो देखो, तो these two triangle लेने के बाद PQ is the common height, तो हमें प्रॉपर्टी मालूम है, suppose the heights are same, then the ratio of area of two triangle is equal to their corresponding, the ratio of their corresponding heights। और तो आपको ऐसे नहीं मालूम हुआ तो आप लिखो ऐसे, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, AB और AP is the height, AP is the base and PQ is the height, right। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ is equal to 1/2 गेट कैंसिल होता है, और लिखना है तो आप लिखो 1/2 into AP into PQ, right। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB, BP और PB is the base and PQ is the height, PB into PQ। तो कंडीशन हम फर्स्ट ही, आपको समझ में आया तो फर्स्ट ही लिखो, अदरवाइज ऐसे करें तो क्या आता है, 1/2 गेट कैंसिल, PQ गेट कैंसिल, देन इट इज इक्वल टू AP by PB, राइट। तो एरिया, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस, राइट। तो दिस इज 1। नेक्स्ट, again ratio of area of triangle APQ, तो फर्स्ट ये लिए APQ एंड PQB लिए, अब APQ PQC ट्राइंगल लीजिए, राइट। ट्राइंगल PQC, right, PQC। See here, again these two triangle they have the common heights, right। तो लिखो आप, आपको समझ में आए तो लिखो, नहीं तो आप ऐसे ही लिखो 1/2, और यू राइट 1/2 into in APQ, AQ is the base and PQ is the height, again 1/2 into PQC, in triangle PQC, right, QC is the base and PQ is the height, right। 1/2 get cancelled, PQ is get cancelled, then is equal to AQ divided by QC, this is 2, right। or you write here area proportion to base, तो आप यहाँ कंडीशन भी लिख सकते हैं, एरिया proportion to base, right। तो देखो 192, right। तो नेक्स्ट, see here, next segment PQ is common base, तो see here, तो लास्ट ये दोनों देखो
common base of triangle PQB and triangle PQC, राइट। तो दोनों ट्राइंगल को कॉमन बेस है, राइट। एंड सेगमेंट PQ, तो PQ किसके साथ पैरेलल है? सेगमेंट BC, राइट, BC। हेंस तो देखो कंडीशन नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ द बेसेस एंड the heights are same, then the ratio of area of two triangle is equal to 1, right? So ratio of or area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC, right? This is the condition number 3। तो देखो यहाँ, तो फर्स्ट कंडीशन में APQ डिवाइडेड बाय PQB था, तो PQB is equal to PQC, means from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, see here, area of triangle APQ divided by area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ divided by area of triangle PQC. See here, PQB and PQC are equal in third condition, and condition number 1 is APQ divided by BQB, and in second condition area of triangle APQ and PQC. Therefore AP divided by PB and AQ divided by QC. This is the proof. Hence proof. Okay, remaining part will be continued in next class.